अथ श्री मुकुन्दमालस्तोत्रम् उच्यते यस्य नगरे रङ्गयात्रा दिने दिने तमहं शिरसा वन्दे राजानं कुलशेखरम् श्रीवल्लभेति परदेति दया परेति भक्तप्रियेति भवलोटनकोविदेति नाथेति नागशयनेति जगन्निवासेति आलापिनं प्रतिपदं कुरु मां मुकुन्द। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो विष्णुवंशप्रदीप। जयतु मेघा श्यामलः कोमलांगो जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्द। मुकुन्द मुन्ना प्रणिपत्ति याचे भवन्तमेकान्तमियर्थमर्थम् अविस्मृति तच्चरणारविन्दे भवे मेस्तु भवत्प्रसादात्। नाहं वन्दे तव चरणयोर्द्वन्द्वमद्वन्द्वहेतो कुम्भीपाकं गुरुमभिहरे नारकं नापनेतुं रम्या रामामृतनुतला नन्दनेनाभिरन्तुं भावे हृदय भवने भावयेयं भवन्तम्। नास्ता धर्मेण वसुनिचयनैव कामोपभोगे यद्यद् भव्यं भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुरूपम्। एतद् प्रार्थं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि तत्पादाम्भोरुहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु। दिवि वा भुवि वा ममास्तु वासो नरके वा नरकान्तकप्रकामम् अविरीयपदपङ्कजपञ्चरान्त अद्यैव मे मानसराजहंस। प्राणप्रयाण समये कफवात पित्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। चिन्तयामि हरिमेव सन्ततं मन्दमन्दहसिताननाम्बुदं नन्दगोपतनयं परात्परं तारदादिमुनिवृन्दवन्दितं। करसरणसरोजे कान्तिमन्नेत्रमीने श्रममुषिभुजिचिप्याकुले गाधमार्गे हरिशिरसि विगाय्या पीयतेजो जलौघं भवमरुपरिखिन्ना खेदमद्यत्यजामि। सरसिजनयने ससङ्गचक्रे मुरविधिमा विरमस्मचित्तरन्तुं शिखवतरं न जातु जाने हरिचरणस्मरणामृतेन तुल्यं। माभिर्मन्दमनो विचिन्त्य बहुधा यामि स्थिरं यातना नामी न पवन्ति पापरिपव स्वामी ननो श्रीधरा। आलस्यं व्यपनीय भक्तिसुलभं ध्यायस्व नारायणं लोकस्यभ्यसनातनोपनकरो दासस्य किं नाच्यं वा। भवजलधिगतानां द्वन्द्ववाताहतानां सुतदुहित्रिकलत्राणभारार्दितानां विषमविषयतो ये मत्स्यतामप्लवानां भवतु शरणम् एको विष्णुपोतो नराणां। भवजलधिगमाधं दुस्तरं निस्तरेयं कथमहमिति चेतो मास्मगः कातरत्वं। सरसि सदिशि देवे तावकी भक्तिरेका नरकविधिनिशरणा तारयिष्यन्तवश्यम्। त्रीणापुष्यन् क्षणमति भवतो भक्तिहीनान् पदाब्जे माश्रौ संश्राव्य वन्दं तव चरितमुपास्यन्त दाख्यानजातं। स्मार्संवादवत्वमपि भुवनपते चेतसा पावुवानं मा भुवं त्वत्सपर्याव्यतिकररहितो जन्म जन्मान्तरेऽपि। जिह्वे कीर्तय केशवं मुररिपुं चेतो भज श्रीधरं पाणिद्वन्द्वसमर्चयाच्युतकथा श्रोत्रद्वयं त्वं शृणु। कृष्णं लोकयलोचनाद्वय हरे गच्छाङ्गियुग्मालयं जिगरघ्राणमुकुन्दपादतुलसीमूर्धन्नमादोक्षजम्। हे लोका शृणुत प्रसूतिमरणाव्याधे चिकित्सामिमां योगाज्ञसमुदाहरन्ति मुनयो यं यज्ञवल्क्यादया। अन्तर्ज्योतिरमेयमेकमकृतं कृष्णाख्यमापीयतां तत्पित्तं परमौषधं वितनुते निर्वाणमात्यन्तिकम्। हे मर्त्या परमं हितं शृणुत वो वक्ष्यामि संक्षेपतः। संसारार्णवमापदुर्मि बहुलं सम्यक् प्रविश्य स्थिता नानाज्ञानमुपास्य चेतसि नमो नारायणात्येत्यमुं। मन्त्रं सप्रवणं प्रणामसहितं प्रावर्तयध्वं मुहुः। पृथिवीरेणुरणोपयांसि कणिका फल्गुस्फुलङ्गो लघु तेजो निःश्वसनं मरुत्तनतरं रन्दं सुसूक्ष्मं नव। क्षुद्रा रुद्रपितामहप्रभृतया कीटा समस्तासुरा दृष्टे यत्र सतावको विजयते भूमावधूतावधि। बद्धेनाजलिना नतेन शिरसा गात्रे स्मरगोद्गमे कण्ठेन सरसदगतेन नयनेनोद्गीर्णबाष्पाम्बुना नित्यं तच्चरणारविन्दयुगलध्यानामृतस्वादिनम् अस्माकं सरसीरुहाक्ष सततं सम्पद्यतां जीवितम्। हे गोपालक हे कृपाजलनिधे हे सिन्धुकन्यापते हे कंसान्तक हे गजेन्द्रकरुणापारीण हे माधव हे रामानुज हे जगत्त्रय गुरो हे पुण्डरीकाक्ष मां। हे गोपीजननाथ पालय परं जानामि न त्वं विना। भक्तापाय गभुजङ्गरुणमणि त्रैलोक्यमुद्रामणि गोविलोचन चातकाम्बुदमणि सौन्दर्यमुद्रामणि
यक्कान्तामणि रुक्मिणी धनकुचान्दन्दैकभूषामणि श्रेयो देवशिखामणिर्दिशतु नो गोपालचूडामणि शत्रुच्छेदैकमन्त्रं सकलमुपनिषद्वाक्यसम्पूज्य मन्त्रं संसारोत्तारमन्त्रं समुपचिततमसस्सङ्गनिर्याणमन्त्रं सर्वैश्वर्यैकमन्त्रं व्यसनभुजसदन् द्रष्टसन्त्राणमन्त्रं जुह्वे श्रीकृष्णमन्त्रं जप जप सततं जन्म साफल्यमन्त्रं व्यामोहप्रशमौषधं मुनिमनोवृत्तिप्रवृत्त्यौषधं दैत्येन्द्रादिकरौषधं त्रिभुवने सञ्जीवनैकौषधं भक्त्यात्यन्त्यहितौषधं भवभयप्रदंशनैकौषधं श्रेयप्राप्तिकरौषधं पिबमनः श्रीकृष्णदिव्यौषधम् आम्नायप्यसनान्यरण्यरुदितं प्रेताव्रतान्यम्रहं मेधश्चेदफलानि पूर्तविधयः सर्वे हुतं भस्मनि तीर्थानामवगाहानि च गजस्नानं विना यत्पदं दन्दाभोरुहसं स्मृतिं विजयते देवस्वनारायण श्रीमन्नाम प्रोच्य नारायणाख्यं केन प्रापुर्वाञ्छितं पापिनोऽपि हान पूर्वं वाक्प्रवृत्तान तस्मिन् तेन प्राप्तं गर्भवासादिदुःखं मज्जन्मना फलमिदं मधुकैटभारे मत्प्रार्थनीयमदनुग्रह एष एव तद्भृत्य भृत्य परिचालक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इतिमानुस्मरलोकनाथ नाथेन पुरुषोत्तमे त्रिजगताम् एकाधिपे चेतसा सेवे स्वस्य पदस्य दातरि सुरे नारायणे तिष्ठति यं किञ्चित् पुरुषाधमं कतिपयग्रामी समाल्पार्थदं सेवायै मृगया महेन रमहो मूकावराका वयम् मदन परिहर स्थितिं मदीये मनसि मुकुन्द पदारविन्दधाम्नि हरिनयन कृशानूना कृशोषि स्मरसि न चक्रपराक्रमं मुरारे तत्तं ब्रुवाणि परमं परस्मात् परमदुच्चरन्ति विसतां फलानि प्रावर्तय प्राञ्जलरिस्मजुह्वे नमानि नारायण गोचराणि इदं शरीरं सतसन्दजर्जरं पतस्य वश्यं परिणामपेशलं किमौषधं पृच्छसि मूढदुर्मते निरामयं कृष्णरसायनं पिब दारावाराकरवरसुता ते तनुजो विरिञ्चि स्तोता वेदस्तव सुरगणो भृत्यवर्गप्रसाद मुक्तिर्माया जगदविकलं तावकी देवकी ते मातामित्रं बलरिपुसुतस्तत्त्वजन्नं न जाने कृष्णो रक्षितु न जगत्त्रय गुरो कृष्णं न मध्वं सदा कृष्णेनाखिल शत्रवो विहीनिता कृष्णाय तस्मै नमः कृष्णादेव समुत्थितं जगदितं कृष्णस्य दासोऽस्म्यहं कृष्णे तिष्ठति समेतदखिलं हे कृष्ण रक्षस्व मां तत्त्वं प्रसीद भगवान् कुरु मय्यनाथे विष्णुं कृपां परमकारुणिकाखिल त्वं संसारसागरनिमग्नमनन्तदीनम् उद्धर्तुमर्हसि हरेण पुरुषोत्तमोऽसि नमामि नारायणपादपङ्कजं करोमि नारायणपूजनं सदा वदामि नारायण नाम निर्मलं स्मरसि नारायण तत्त्वमव्ययं श्रीनाथनारायण वासुदेव श्रीकृष्णभक्तप्रिय चक्रपाणे श्रीपद्मनाभाच्युतकैटभारे श्रीराम पद्माक्ष हरे मुरारे अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति वक्तुं समर्थो न वक्ति कश्चिद् अहो जनानां व्यसनाभिमुख्यं ध्यायन्ति ये विष्णुमनन्तमव्ययम् हृत्पद्ममध्ये सततं व्यवस्थितं समाहितानां सतताभयप्रदं ते यान्ति सिद्धिं परमां तु वैष्णवीम् क्षीरसागरतरङ्गसीकर सारतारकृपचारुमूर्तये भोगिभोगशयनीय सायिने माधवाय मधुविद्विषे नमः यस्य प्रियो श्रीधरो कविलो कवीरो मित्रे द्विजन्मवरपद्मसरावभूतां तेनाम्बुजाक्षचरणाम्बुजषट्पदेन राज्ञा कृताकृतिरयं कुलशेखरेण यस्य प्रियो श्रीधरो कविलो कवीरो मित्रे द्विजन्मवरपद्मसरावभूतां तेनाम्बुजाक्षचरणाम्बुजषट्पदेन राज्ञा कृताकृतिरयं कुलशेखरेण इति श्रीमुकुन्दमालास्तोत्रम्।